Hi Gaurav, over to you. Hello Harsh, how are you? I'm I fine. think I think Gaurav's video's got stuck. Uh, I think he has a problem with the connection, but that's fine. That's no problem. Welcome. Let me just welcome all the friends who are here. We have Meera, Ramanan, Lakshmi, Sataj, lots of other friends who are sort of joining in. So we'll just give them a minute to join in. And Harsh, good to see you here. Welcome to Asian Adventures webinars. I think it'll be very interesting. So when I experienced, that walk with you in Rao Jodha Park in Jodhpur, it was a magical walk. The way you conducted it, the way you started the entire thing, and I didn't even know that there was a park as beautiful as Raujota Park, anywhere in Rajasthan, because everybody sort of connects Rajasthan with either DNP or national parks. But places like Kishan Bagh and Rao Jodha Park, they just sort of go unnoticed by many, and it's a new development. So we will get to know more about the history and the habitat restoration and the hard work that's gone in from you. So, friends, welcome to this webinar, and I will let Gaurav introduce himself and Harsh to you, and let's get started. Thank you so much, sir. Gaurav, are you there? Okay, don't worry. Harsh, you go ahead and introduce yourself. Okay. So, Namaskar. मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह राठौर है. I'm working as a naturalist at Rao Jodha Desert Rock Park, uh, which is in Jodhpur, basically, and it's on the outskirts of Mehrangarh Fort, down in the around the Mehrangarh Fort. So, basically, I had joined this place in 2015, but the project was started much earlier in 2006, but it was open for the public in 2012 only. So, uh, जब मैंने ज्वाइन किया प्लेस तो इट वाज लाइक लेस प्लांट्स लेस डेंस एंड लेस ग्रासेस एंड जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए गया सो देयर वाज अ in the newspaper there was an advertisement that they were looking for a naturalist and I wanted to be one of these. So I went to the place, I went to the park, and then I noticed things, I noted them, and then I came back and I researched what these are things and all. And then I went into the interview and Pradeep sir, the director of the park, he asked me that, what did you see there? I said, that was all a jungle. See, can you tell me how many species of the plants were there? I said, there were more than 200 species that I could notice. And then the interview went on for another half an hour, and then I was the only one who got selected by the blessing of the god and the parents. So this is where my journey started at Ravnita Park in 2015 and 20th of December. So I'm going to complete my 8 years working over here as a naturalist. So before I tell you more about Ravnita, what it is, we should have to understand what Ravnita Park is actually, and what we are doing over here, and what was the need for doing such things. And I'll be telling you how I could learn things over here from this place. So, Rao Jodha Park is actually a restoration project of the native vegetation that you get to see when you drive towards the west of Rajasthan. That is when you drive towards the Jaisalmer. And it is basically, we are having the plants limited to the Marwar region. And Marwar, if I talk about the boundaries of the Marwar, you can see on the maps that it starts right from the Gujarat and it is up to Jaipur, and it's from Udaipur to Jaisalmer. It's a huge, huge, huge landmass.
So this whole Marwar region used to be known as the land of dead. Marwar itself means land of dead. And there are also few synonyms like Marwar, Marupradesh, Marudra, Marubhumi. These all means the land of dead because our annual rainfall over here was only 50 to 80 mm. I'm talking about around 100 years back. So at that time, the people over here they used to face droughts continuously, and then our two major occupation over here was animal husbandry, and another was the agriculture, and both were completely depending on the rainfall. So if there's no rain, there's no fodder for the cattle, and you cannot do the animal husbandry. And if there's no rain, you cannot cultivate your crops. So people used to migrate from this area. And the Maharaja Umid Singh ji was the then king in India. He was a very nice king and he was a very nice administrator, basically, I should say. And he used to provide the drought relief work to to the to the people living in his kingdom. And you can say that Maharaja Umed Singh Ji, the father of the modern Jodhpur, he introduced all those amenities over here, which was required for a city to be known as a modern city. May it be a school, college, zoo, public library, may it be a stadium, may it be a theatre, may it be a Umid Bhavan Palace itself, may it be a polo ground, or may it be a Javai Dam, which was one of the major suppliers of the water towards Pali and Jodhpur city. So Maharaja was doing it his best to provide occupation to people and so that the people don't migrate from this area. But then he wanted to have a permanent solution for providing the fodder during the droughts to the cattle and providing wood for the fuel purpose for making houses, huts, and tools. It was a big challenge in front of the king. And if the people will cut whatever trees are left with them, the situation may become more worse. So to cope up with all these situations, Maharaja started looking for a plant which can survive here in this arid atmosphere. And then he got an answer from Mexico. Through Britishers, he came in contact with the Kew Gardens, which is in London. And Kew Gardens is basically a very large bank of the seeds, and they have seeds of all the plants that are known to the human race. So the Maharaja contacted the Kew Gardens, and then they said that you should plant Prosopis juliflora here. And Maharaja imported the seed of that Mexican mosquito, the Prosopis. And as Maharaja Umid Singh Ji was the first prince in the entire India to get a A-level flying license, being an aircraft enthusiast, he put all the seeds in his aircraft and started broadcasting seeds through air into the whole of his kingdom, whose boundaries I had already mentioned that it was from Gujarat to Jaipur and from Udaipur to Jaisalmer. It was a huge patch, and you cannot just take seeds and sow it to the whole of this every inch of this area. So what he did, he just broadcasted the seeds through his aircraft into the whole of his kingdom, and it was done in 1920s, just before the rains. So the seeds, the sad part of the story starts now. See, the thoughts of the Maharaja was noble. He wanted to introduce a plant which can be a solution for the fodder, which can be a solution for the fuel wood for making houses and tools. But then eventually, what happened? It turned out to be a disastrous plan by the Maharaja. No animal was eating it as fodder. You cannot make furniture out of this wood because if you do, you'll get cracks or the fractures in the wood and making it useless for the use of that furniture. This was only good that it was saving the other trees to get cut because people had started using it as a fuel wood. And it also turned out to be an invasive species. It was killing the native plants because it was secreting alkaloids to the roots, and the native plants were not able to prevent that alkaloid spread. So what they did, they just shifted out of that alkaloid strategy and started growing nearby. But as the plant was also growing nearby, the roots of that Mexican musky went close to the indigenous species, which was growing very close to it, and then it again started growing up. And then as soon as the canopy went bigger and then the root went down, again the same story started. The native plants again shifted from here to here, here to here, there. And all those creatures who were depending on those native plants were initially coming to this place, then they got shifted here, there, and there. So this is how that Mexican mosquito has actually disturbed the whole ecology. So what we are doing over here is our boundaries are the
for the park. It's like 72 hectares of the total land. It was all under that influence of that invasive species of Prosopis bull. So we had divided this whole area into different blocks, and then we hired 15 men that belongs to a community known as Khandwalia, and we hired them in 2006 when we started this project of restoration. So the first challenge was to remove that plant and all those plants which were not native, and then to plant the native species. So with this plant, there's a one problem that if you just chop the plant and think like you had killed the plant, we are wrong. If you had chopped 4 branches, it will regenerate from 8 branches. If you had chopped 8 branches, it will regenerate from 15, 16, 28. So to get rid of it, you have to get it to the roots. And our habitat is a rocky habitat. Jodha Park is all about rocky habitat. It's outcrop of a volcano which was here around 750 million. So these rocks have a tendency of having cracks into it. Okay. So these Mexican muskets were growing into the crack. And if you want to get rid of it, you just cannot chop this plant. So you have to remove it with the roots, as I told you earlier. So what the laborers were given the task like one man will remove one plant in one day. So this is how we started our project in 2006 with a team of 15 men, and it was like you have to chop the plant, you have to break the rock, you have to make a pit, and you have to go at least 45 centimeters into the ground to get that root out. Until unless you have got the root out, you may not get rid of it. Remember this. Okay. So these 15 men, they worked for the park for 7 continuous years. And we still have one patch left with the tulip flora, which is behind Jaswanthada. So park is from Jaswanthada up to the fort. So after we cleared one patch, we completely eradicated this plant out from the one patch, and then we went to the different cities, villages, and towns of this Marwar region, and then we collected the native plants or the seeds, whatever we could get from there. Then we have a native plant nursery close to our park. So we are growing all these native plants which we could see over there, which we could find over there. So we are growing them over there, and then we are planting them inside the same pits from where we had removed that Mexican mosquito. Now the question over here is why we had used the same pits from where we had removed that Mexican mosquito. So the answer is that although that plant, that Mexican musket, turned out to be an invasive species, it turned out to be a completely flop plant by the market. It turned out to be a useless plant. But then this plant has told us where a plant can survive. See, every coin has two faces. One was the bad part of the plant, another is the good part of the plant. So this Prosopis juliflora has told us where a plant can survive. See, in this rocky region, you may find that plant growing on the top of a hill where you cannot even assume water. But this plant is growing very happily over there. This means that it is growing in a crack of the rock, and these cracks have tendency of absorbing rainwater. And nobody knows how hollow these cracks are, how deep they are, and how much water is logging into them. But this plant is suggesting us that if I can grow here for a whole year, that means that much water is coming over here on which any plant can survive for the whole year. So that place was actually a natural pool. Okay. So this is why we use the same pit so that we need not to water the plants or the fresh plantation done by us. So this is how we started learning and doing things. And we used to mark the plants. We had given the number to each plant over here. And then we used to check the health of the plants. Okay, number 55 is not working. 77 has got the new leaves. 88 is in flowering. 92 is in fruiting. Right? We used to keep the phenologies for these all plants. And the rule was survive if you can. Otherwise, we are going to replace you. Survival of the fittest was actually the rule of the plant of the park. And due to the intense plantation done by us and due to the self germination over the years at Rouser Park, this park is getting greener, and it is getting denser and denser each single day. So this greenery has actually attracted the wildlife.
So when we started this project in 2006, we had a bird count, and we could only count 62 species of birds in a whole year. But now I am very, very, very proud to say and share this, that we have record of 211 species of birds that are coming to park in just these much of years, along with 43 species of butterflies, 10 species of snakes we have got, and then we have got wild mammals that I talk about. We have got blue bull, we have got wild boars, porcupine, mongoose, mud lizard. Mud lizard is a reptile. But then all these things we have got. We have desert hares. We have civets, which is one of the endangered species. So we have a civet over here. Though we had not seen any of them alive, but we had spotted two dead civets, and then we keep on we keep on spotting the scats of these civets. So we know that they are here. And Pokemon is also very nocturnal creature. I had only spotted it thrice in my whole career in the park. So this is particularly a very, very, very nocturnal creature. And Harsh, luckily, can I start your Harsh, can I start your slideshow? You want me to start? Okay, I'll you let you can know. tell me later. Are we running out of time? Oh, we've got plenty of time. Go right ahead. No problem. So right now over here, I would love to share this, that we had spotted one wild, not wild, the jungle cat yesterday at the park. This is a very new thing to the park, and we'll be happy to host that creature over here. So this is how we started this, and today particularly, this was just the introduction about the park and now what we are here to discuss is the walk of adaptation. Basically, whenever I go on walk, I usually tell people that how these plants have adapted themselves to this arid atmosphere, how well they are doing, and with a very limited resources. So, can you kindly or let me start? Thank you. So, this is just an introduction. Mhm. And okay, so on this first slide, it is like welcome to this beautiful world of the Thar Desert, and this basically, this photograph in which you can see many shrubs here. So these are actually, this is a jungle of desert, and the jungle of desert has got a particular term. The term is ROE, ROEE. ROE is the term for the jungles of the desert. So ये जो आप photograph देख रहे हैं, this is all a ROE, and it also shows that this is an arid atmosphere, and the survival over here is very hard. Okay, so you will find they are like with a very less leaves. Most of the plants will not have the leaves over here. These are kind of adaptation that I'm going to discuss. So our rainfall, as I told you, was only 50 to 80 mm, and it was very less water. And where there's less water, there's less water storage. Matlab, where there's less rain, there's less water storage. Where there's less water storage, there's greenery, and where there's less greenery, there's less life. So we had been termed as the land of dead. This is how the land of dead came into existence. Okay. But then I always love to say that we are not a land of dead. We are full of life, but that life is very, very, very camouflage. Unless you are going and looking for that life, you may not see that life. And to see that life, you need very keen eyes and ears. Okay. So that's for the fauna. And for the plants, plants just need a zeal to survive. That's the next slide. So major thing over here is to understand that desert plant had adapted to their conditions, to this dry condition. So what most of these plants have done, if I talk about the common adaptations by this plant, yeah, common features of the desert plants, like their roots will be too long, too deep. Basically, they're going up to the last source of water into the ground, and their height will be less. There are tiny leaves into it,
most of these you will find them to be thorny, and the seeds will be hard coated, right? So, or you will find there are no leaves. Few of the plants are like succulents. They are storing water in the form of different like sap or in the latex form. So here let's discuss the first thing, that is roots. Okay. So in this slide you can see a date palm is there, and then there are few bushes, and then legumes are there, grasses are there, and cacti. So this shows the different kind of root system, and it shows how deep this can. So it also just not uh, is there for water, to accumulate water, to store water, but they are also there for the as a soil binder, because in desert there are shifting dunes, right? So they also help to check the shifting dunes here. एंड देखिए, डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स ज्यादा गहरी हो सकती है नस्बत उसके प्लांट की हाइट के, ठीक है? सो उसमें ऐसा क्यों है? तो इसमें यहाँ पे एक समझिए बात कि आपकी 4 मंजिल की बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी, एज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एंड उसमें आपको अंडरग्राउंड वाटर 5th फ्लोर तक पहुंचाना है, 4th फ्लोर तक पहुंचाना है ना? तो आप क्या करेंगे, एक पावरफुल मोटर लेंगे ताकि आपके पानी ऊपर तक आराम से पहुंच सके, ठीक है? पर अगर आपका घर जो है वो एक ही स्टोरी का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पानी की जो मोटर है वो आपकी थोड़ी छोटी होगी तो काम चल जाए, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी हाइट कम कर दी, क्योंकि उनको पता है अगर ऊपर तक पानी फेंकना पड़ा बहुत ऊपर तक, तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी जब फोटोसिंथेसिस, फूड बनेगा। फूड कब बनेगा? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, वाटर लॉस। तो जब वाटर लॉस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर लॉस हो रहा है, और वाटर तो है ही जमीन में, है ना? तो वाटर इज लग्जरी फॉर दीज प्लांट्स। To minimize the water loss and to minimize the utilization of the energy, इन्होंने क्या किया, अपनी रूट्स को चैनलाइज कर दिया, अपनी रूट्स को डीप कर दिया, सो दैट कम हाइट तक ही पानी फेंकना पड़े, क्योंकि ग्राउंड में पानी नीचे से लेकर के आना पड़ता है ना, तो अपनी हाइट कम कर दी ताकि ऊपर ज्यादा नहीं। एंड देन फ्यू ऑफ दी प्लांट्स दैट बिकम सक्लेंट्स, अच्छी पानी स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे ही पानी आया, बारिश हुई, ऊपर के लेवल पर अपनी रूट्स फैलाई और वहां से पानी एक्यूमुलेट कर दिया, एंड on that accumulated water it is going to survive for the bad time. Then there are grasses, and then there are cacti. If you stay into the photograph in the last corner, so the cactus जो है डेजर्ट में होता है, बट हमारे पार्क में थोर है। थोर इज नॉट अ कैक्टस, बट इट लुक्स लाइक अ, but it stores water into the form of white milky sapping. But that sap is toxic, so it becomes useless for the humans and animals. But then इसकी जो roots हैं, it's a lithophyte. The Thor or the Euphorbia caducifolia is actually a lithophyte. It grows into the rocks, and it forms a very net-like structure, and it tries to accumulate the surface water first. उसके बाद ये जो क्रैक्स है उसमें अपने रिबन लाइक रूट्स को नीचे तक लेकर के जाता है, और जहां पे स्लाइटेस्ट आइडिया इसको मिलता है मॉइस्चर का, वहां तक ये अंधेरे में रॉक्स के अंदर जाता है, सो दैट इट कैन गेट द कैप्चर्ड मॉइस्चर जो कि वहां पे ट्रैप्ड है रॉक्स के अंदर ना, वो इस लेकर के आता है। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिए एक जो कैक्टस आपको दिख रहा है लास्ट में, इट इज स्टोरिंग वाटर इनटू द फॉर्म ऑफ ट्यूबरस रूट्स, ठीक है? वो बल्ब और ट्यूबरस रूट मैंने ऑलरेडी किया, कैक्टस ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। देयर इज वन मोर थिंग, there's a live example of a desert plant that is having these bulb-like structures, और अब यहाँ पे देखिए, it's again a lithophyte. So what these lithophytes do, how they are growing here is like most of these lithophytes basically are ephemerals, ठीक है? वो छोटे से लाइफ स्पैन के लिए आते हैं, बारिश हुई
ग्रो किया, जल्दी जल्दी से लीव्स आई, जल्दी जल्दी से फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, सीड्स आए, एंड देन द प्लांट विल डाई। ठीक है, 2 3 4 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एंड इट विल डाई, एंड इट विल लीव, और इट विल लेफ्ट these seeds behind. ठीक है, and then how are these seeds going to survive or going to grow when they will get rain? ठीक है, और रेन आएगी थोड़ा टाइम बाद, तो ये जो सीड्स होते हैं दे आर हार्ड सीड्स। ठीक है, अच्छा, और रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के अंदर, as I told you earlier, that these cracks are absorbing the rainwater. So these plants, little plants, एक क्रैक है, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज ए क्रैक। ओके, और हवा के साथ इसमें क्या आ रहा है, मिट्टी आ रही है, बिकॉज वी हैव शिफ्टिंग ड्यून्स ओवर हियर एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दीज सैंड पार्टिकल्स इनटू द एयर। सो ये आके आके डिपॉजिट हो गई, देन देयर विल बी सम कचरा, maybe some manure, and the dry leaves will come and will accumulate over here, and then maybe one day the seed of a grass or a small ephemeral will come along with the rain, with the air, and it will accumulate in the crack of these rocks. Okay, then the seed is there, the manure is there, the soil is there. What it is waiting for, it is just waiting for the water to come, and as soon as the water will come into the crack, the life will germinate out. Okay, so they just sense the slightest moisture and then they started coming out, forming the net like structures. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, sorry, so this is actually showing the horizontal roots or the asexual reproduction. So basically asexual reproduction is that where you are not requiring male and female parts or male and female plants to grow, to re- to do the reproduction and then to grow a new plant from the seed. So यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि कैसे इसने हॉरिजॉन्टल एक अपना नेटवर्क बनाया है रूट्स का। बेसिकली ग्रासेस ऐसा करते हैं, पर अगर मैं आपको बात करूं एनागोसियस की, एनागोसियस पेंडुला जिसको हम धोक भी बोलते हैं, या एनागोसियस न्यूमुलेरिया जिसको हम इंद्रोक बोलते हैं। सो जोधपुर के पास एक जगह है सावत कुआं, इट्स लाइक 45 किलोमीटर्स ऑन टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जोधपुर। वहां पे एनागोसियस न्यूमुलेरिया जिसको हम इंद्रोक बोल रहे हैं, उसका एक जंगल है, यू नो, और वो जंगल कितना बड़ा है, उसमें 500 पेड़ होंगे लगभग, पर जो उसका मदर प्लांट है, दैट मदर प्लांट इज एक्चुअली वन, और उसी की रूट्स आगे गई, जहां पे उसने पानी सेंस किया वहां से एक नया प्लांट निकल के आया, दैट्स एन एक्शन रिप्रोडक्शन। उसी से एक रूट और आगे गई, वहां से जहां पे उसने पानी सेंस किया वहां से एक और निकल के आया। सो इट इज बेसिकली वन प्लांट, एक ही प्लांट है, जहां को पानी सेंस होता गया वहां पे उसने नया प्लांट ग्रो कर दिया, और सेंस होता गया और नया प्लांट सोर्स कर दिया। सो इट्स अ जाइंट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लानट। पर अगर आप एनाकोसियस की बात करेंगे, अगर आप एनाकोसियस पेंडुला की बात करेंगे, जो कि अरावली का सबसे मेजर प्लांट है, आपको सबसे ज्यादा अगर लश ग्रीन एनवायरमेंट मिलता है वो धोक की वजह से। ठीक है, सो धोक जो है वो भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, पर इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च नाउ। इट कैन बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, यू नो, कई किलोमीटर लंबा हो सकता है, कई 100 किलोमीटर लंबा तक भी हो सकता है, बट अभी इसके ऊपर रिसर्च करनी बाकी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इट, गोइंग ऑन दैट। बट देन ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड यू विल फाइंड द एरियल रूट्स ऑफ हियर। देखिए, एरियल रूट्स आर आल्सो नोन एज प्रॉप रूट्स बेसिकली, और ये जो आपके सामने एग्जांपल है दैट्स ऑफ अ banyan ट्री। banyan ट्री जो है, इसकी जो आप प्रॉप रूट्स देख रहे हैं, डेजर्ट में इसका एक काम ये भी है कि ये एनवायरनमेंट से जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दूसरा इसका क्या काम है, अगर आप इस फोटोग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो यू विल फाइंड रूट्स आर गोइंग टू द ग्राउंड एंड इट्स अगेन टर्निंग इनटू अ स्टेम। ठीक है, वो स्टेम क्या करता है, ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। So in Kumbhalgarh, I was there 2 years before, 2 years back. So I noticed a very giant this Ficus bengalensis, this banyan tree, और वो इतना बड़ा था कि मतलब एक
पेड़ का तना इधर है, उसकी एक ब्रांच जा रही है, उसके अंदर से एक एरियल रूट आई एंड वो नीचे आकर के वो एक नया पेड़ बन गई, एक नया तना बन गया। फिर वहां से एक और ब्रांच निकली और निकली और निकली। इट वाज अ बिग 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 कैनोपी ऑफ समवेयर अराउंड 100 स्क्वायर मीटर। इतना बड़ा वो एक पेड़ था। एंड द मंकीज दे वर यूजिंग दोज ऑल कनेक्टेड ब्रांचेस एज अ हाईवे। ठीक है, जैसे शादी का मंडप होता है ना, उस तरीके से वो पूरा चारों तरफ से एंड ऊपर देयर वाज नथिंग, चारों तरफ से उसके अंदर पेड़ लगे। सो ये एरियल रूट्स जो हैं, इनका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जिस भी चीज की इंपॉर्टेंस है ना, हम कई पेड़ों को पूजते हैं। उनमें से एक है बैनियन ट्री। और हम बैनियन ट्री की मतलब अगर मैं माइथोलॉजी की बात करूं तो हमको इससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो भी हमारे रिलीजन में इंपॉर्टेंट था, हमने उसका क्या किया, हमने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। तो इसकी एरियल रूट्स पानी एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी थी, और प्लांट को, क्योंकि इसकी हैवी कैनोपी होती है, बहुत हैवी वुड होती है इसकी, तो उसके ट्रंक्स को, उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए इसको एरियल रूट्स की जरूरत थी। तो इसके लिए क्या बोल दिया गया कि ये तो शिव जी की जटाएं हैं, अगर आप इसको काटेंगे तो आपको ये अच्छा नहीं। ठीक है, सेम इज विद द पीपल। पीपल के लिए हम क्या बोलते हैं कि पीपल के ऊपर भी हम वो डोरी बांध देते हैं, बोले इस पे आपके एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो आई कम ऑन टू दिस लेटर। बट देन, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको शिव जी की जड़ों जटाओं से रिलेट कर दिया गया, दाढ़ी से रिलेट कर दिया गया। एंड नाउ सो दैट यू कैन नॉट हार्म दीज रूट्स, राइट। अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, दैट इज दिस थोर। सो थोर जो है, दिस, इसकी मैं बात कर रहा था, इट हैज गॉट अ टेम्परेरी रूट्स। टेम्परेरी रूट्स मतलब क्या हुआ, जैसी बारिश आई तो उसने ऊपर ऊपर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, मैश लाइक एक नेटवर्क बना लिया इसका, रूट्स का। एंड इट इज एब्जॉर्बिंग द रेन वाटर एज मच एज इट कैन फॉर द बेड टाइम्स टू कम, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज अ सक्युलेंट प्लांट। एंड इसकी जो रूट्स हैं, जो परमानेंट रूट हैं, टेम्परेरी रूट तो इसका एक वो हो गया एडेप्टेशन। परमानेंट रूट्स जो है वो रिबन लाइक होती है। ठीक है, नाउ आई वुड लव टू स्विच ऑन द लीव्स हियर। लीव्स जो है, ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली कुमट। एंड ज्यादातर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर लीव्स छोटी होंगी, टाइनी टाइनी लीव, सो एज टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसके अंदर यह है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही गया। एंड इससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होगा, अगर सरफेस एरिया ही कम हो गया, सो प्लांट्स ने अपने आप को एडॉप्ट किया, अपना लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया, सो दैट इट कैन ओनली एक्वायर द रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर द सर्वाइवल। और अब आप इसके अंदर देखेंगे तो आप छोटे छोटे, आपको इसके अंदर ये देख पा रहे हैं, छोटी छोटी लीव्स का फाइलोटैक्सी देख पा रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। एंड ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था कि या तो इसके अंदर लीव्स बहुत टाइनी होंगी या लीव्स नहीं होंगी। जिसमें लीव्स नहीं होगी उसके अंदर आप ब्रांचेस देखेंगे तो ब्रांचेस ही अपने आप अंदर काफी ग्रीन होंगी, एंड द ब्रांचेस आर डूइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑन इट्स ओन। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। या सो केयर में लीव्स आती हैं फॉर 1 और 2 वीक्स ओनली। ठीक है, और यूफोबिया में भी आती हैं फॉर 1 और 2 मंथ्स, यूफोबिया कडोसिफोलिया जो थोर है। बट जैसे सार्कोस्टिमा एसिडम है, उसके अंदर लीव्स ही नहीं। ठीक है, तो उसने अपनी लीव्स गिरा दी, परमानेंटली गिरा दी। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, जब लगता है कि उनके अंदर पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है, तो दे स्टार्ट प्लेइंग अ गेम विद द सन। वी आर डेड, दे विल जस्ट शेड देयर लीव्स, है ना, कि वी आर डेड, डोंट शो योर एंगर ऑन मी, ऑन अस। एंड but then as soon as they will sense slightest of the rain or moisture in the air, the new leaves will come. तो इसके लिए कुमट जो है, acacia senegal, that is actually a very 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 nice example. कुमट
की लीव्स आती हैं एज सुन एज दे सेंस द फर्स्ट रेन। जैसे ही रेन हुई वैसे ही लीव्स आई, लीव्स आते ही उसमें इन्फ्लोरेसेंस आएंगे, फटाफट फटाफट उसके अंदर सीड पॉड्स आ जाएंगे, सीड पॉड आ जाएंगे, सीड पॉड्स आते ही राइप हो जाएंगे, राइप होते ही उसकी लीव्स शेड होना चालू। ओके, सो दिस इज अ वेरी फास्ट 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 प्रोसेस। एंड अगर हम ये देखें इसके अंदर एक और तरीके से इन्होंने इनकी जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो अडॉप्ट करी, दैट इज दैट दे हैड फॉर्म्ड अ वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स। हम आज सामने देख रहे हैं दैट इज दिस प्लांट इज एलोवेरा। एलोवेरा ने क्या किया, अपने ऊपर वैक्सी लीव्स लेकर के वैक्स कोटिंग कर दी, ठीक है, सो एज टू मिनिमाइज द वेपर लॉस। ठीक है, सो दिस वैक्स इज नोन एज एक्यूटिकल बेसिकली। एंड जहाँ पे ज्यादातर जो प्लांट्स है दे ओपन देयर स्टोमेटा ओनली एट नाइट, बट इट इज ऑल्सो कंडीशंस जो है वो भी थोड़ी सी फेवरेबल होंगी, तो वो चलता है। अच्छा, इसके अंदर आप ये समझिए कि तुलसी, तुलसी जो है, तुलसी को हम आंगन में लगाते हैं हमारे घर के, ठीक है, वाई वी आर प्लांटिंग दैट इन अवर आंगन। और जो पीपल का पेड़ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये मिथ मानते हैं, देयर इज अ मिथ, है ना, साइंटिफिक मिथ बेसिकली, कि पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दिस इज दिस इज रॉन्ग। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता, पीपल 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन टू इट। सेम इज विद द तुलसी प्लांट। तुलसी को हम अपने घर के आंगन में लगाते हैं, किचन के पास लगाते हैं, किचन के अंदर लगाते हैं पुराने वक्त के अंदर से। और उस वक्त क्या होता था कि आप घर में जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते थे, चूल्हे में इस्तेमाल करते थे, या कुछ भी काम करना है आपको तो आप लकड़ी यूज कर रहे हैं, खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, कुछ भी हर काम के लिए। तो उस वक्त क्या होता था, घर के आंगन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और क्योंकि हमने तुलसी वहां पे प्लांट कर रखी, तो विच इज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड 24 आवर्स, ठीक है। और एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट प्लांट, तो इसके लिए क्या बोला गया कि नहीं, यू हैव टू वाटर इट डेली, और इसकी रोज पूजा करनी है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव दिस प्लांट, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको साइंटिफिकली भी जोड़ दिया, जो इम्पोर्टेंट है उसको रिलीजियसली भी हमारे इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। आ, अब जो नेक्स्ट प्लांट है, अब आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, आपको कुछ लीव्स पे हेयर्स जैसा कुछ दिख रहा है। सो बेसिकली few lithophytes, they had got the these kind of fine hairs, है ना, on the leaves। जैसे कि एक सेड्रा प्लांट होता है, सेड्रा लेटिफोलिया, उसकी जो आपको लीव्स हैं वो आपको सिल्वरिश, सिल्वर कलर की, ठीक है। सो व्हाट दिस सिल्वर कलर इज, they are actually the very 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 fine hairs on it, which is actually reflecting the light, and it is also reducing the surface temperature. This is a very interesting adaptation by this plant, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, दिस इज अ सोएडा प्लांट, नॉट सोएडा, सॉरी, सैलोसोला प्लांट। एंड व्हाट दिस सैलोसोला इज डूइंग, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मोटी लग रही होंगी, है ना, लीव्स। सो इट इज स्टोरिंग वाटर इनटू द लीव्स नाउ। हमने पहले देखा था कि जो प्लांट है दे आर स्टोरिंग वाटर इनटू द रूट्स। What this plant is doing, this plant is storing water into the leaves, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये प्लांट, इसके अंदर इसने क्या किया, इसने अपनी लीव्स को थॉर्नी कर लिया, सो दैट not all creatures can come and can graze them or can eat them, right? And एक और इसने अंदर अपना बहुत बढ़िया एडेप्टेशन किया कुछ प्लांट्स की लीव्स ने। उन्होंने जो अपना एंगल है लीव्स का, ज्यादातर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, कुछ लीव्स ने अपना एंगल स्कीप कर लिया, ठीक है। ये इसको सोलर एंगल बोलते हैं बेसिकली। मतलब जो लाइट है कैप्चर करने की वो थोड़ा सा ज्यादा हार्श नहीं हो, और लो एंगल्स के ऊपर मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर वो अपना जो लाइट कैप्चर है वो डिक्रीज कर पाए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका लीव्स का था। तो हमने अभी डिस्कशन किया है रूट्स, वी हैव डिस्कस्ड लीव्स। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेम्स। ये जो आप स्टेम देख रहे हैं इसके अंदर, द स्टेम इज ऑफ ए कॉपुलस पेंडुलस वाइन। एक
जिसको हम पीलवान भी बोलते हैं बेसिकली। और पीलवान जो है इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था कि फ्यू ऑफ द प्लांट्स हैव shed their leaves, they had adapted that there will be no leaf left into the plant, वो ग्रो ही नहीं करते लीफ। ये जो केयर है ये ग्रो करता है पर फॉर 1 or 2 weeks ओनली, और बहुत 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 छोटे स्पैन के लिए, और बहुत टाइनी लीव्स होती हैं, यू हैव टू लुक फॉर देम, unless you are looking for them you may not see that those leaves over there. So जो केयर प्लांट है it's again an example of how these plants have adapted themselves to this Thar desert. As I was telling you earlier that अब ये लीव शेड कर दी तो इट इज डूइंग ऑल द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय द ब्रांचेस, और ब्रांचेस को इसने अपना, एक तो ये बड़ा हो जाता है और इट फॉर्म्स अ अम्ब्रेला लाइक कैनोपी ऑन इट, ठीक है। तो उसका क्या फायदा होता है कि इट हैज मेड इटसेल्फ सो मच डेंस सो दैट इट कैन ओनली अक्वायर द रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी ब्रांचेस ग्रीन है तो सभी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, नहीं, कुछ से होता है जो ऊपर ऊपर रह जाता है, जिससे सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है उतना ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वापिस वही वाली बात है, केयर जो है एक सैमोफाइट है, ड्यून्स में उगता है, सॉइल के अंदर उगता है, और वहां पे ड्यून्स में पानी तो है ही नहीं। जब पानी नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, है ना। और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा कर रहा है और पानी उड़ जाएगा तो अगेन द सेम थिंग इट विल, ठीक है। तो टू मिनिमाइज द लॉस इट हैज मेड इटसेल्फ वेरी 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 डेंस। एंड अब यहाँ देखिए, ये मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा था जिसमें कभी भी लीव्स नहीं आती, दैट इज सार्कोस्टीमा। सार्कोस्टीमा एसिड है, तो इसको खीर खीप भी बोलते हैं। इसमें इसने क्या किया, अगेन द सेम थिंग, अपने आप को सकुलेंट तो बना ही लिया है, इसके स्टेम के अंदर इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टेम से ही कर रहा है और उसको सकुलेंट भी बना रखा है इसने, ठीक है। बट दीज द sap which is there, it is in the form of white milky toxic thing. So as it is toxic, no animal is going to eat it, ठीक है। इसने अपने आप को सक्लेंट तो बना रखा है, पानी तो है, पर अगर तुम मेरे को आकर के ग्रेस कर लोगे तो आई मे नॉट सर्वाइव। तो इसने अपने सैप को क्या किया, सैप को टॉक्सिक कर दिया, ठीक है। तो अगेन अ वेरी 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 इंटेलिजेंट क्रिएचर इट इज। एंड यहाँ पे आप देखिए वो हाइट वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ प्लांट्स ने अपनी हाइट कम कर दी सो दैट ज्यादा मिनरल्स और उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़े, सो दैट इट कैन सेव इट्स एनर्जी। Okay, these are about some seeds. So seeds, seeds ने भी एक अपने आप को रिवॉल्यूशनराइज करके और एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन इसके अंदर लेके आया। तो whenever you go on a walk in desert, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ अगर आप ग्रासलैंड में गए हैं तो कभी भी आप बिना सीड्स को अपने शूज में या मोजे में लिए हुए वापस नहीं आएंगे। सॉक्स में आपके सीड्स होंगे या आपके शूज में 100% आपके ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सो ग्रासेस के सीड्स ने या स्मॉल प्लांट्स के एफेमरल के सीड्स ने क्या किया, अडॉप्ट किया अपने आप को, वो थोड़े से थॉर्नी और हुकी क्रिएचर्स हो गए, हुकी थिंग्स हो गए। उसने क्या किया, जैसे ही कोई बर्ड पास से निकल रही है, कोई एनिमल पास से निकल रहा है, तो दे कैन गेट अटैच टू इट। और वो बर्ड जब पानी पीने के लिए गई या वो एनिमल जब पानी पीने के लिए गया और सीड उसमें से झड़ गया वहां पे, तो इट हैज गॉट द वाटर एंड इट मे ग्रो अगेन, ठीक है। पर कई सारे सीड्स ऐसे हैं, जैसे मैं बेर के सीड्स की बात करूंगा, है ना। बेर का जो पेड़ है वो हर साल हजारों 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 सीड्स देता है, और उस सीड्स में से जर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जर्मिनेशन कितना होता है, जर्मिनेशन होता है 2%, 3%, 4% से, ठीक है। और ज्यादातर डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि मैंने बोला एफेमरल्स होते हैं, तो एफेमरल्स का जल्दी जल्दी एक लाइफ साइकिल पूरी हुई एंड देन दे विल बिकम डोर्मेंट आफ्टर शेडिंग देयर सीड्स। अब सीड्स आ गए, बारिश हुई थी नवंबर सॉरी जुलाई एंड अगस्त में, उसने 2-3 महीने का अपना लाइफ साइकिल पूरा किया, नवंबर दिसंबर तक सीड्स आ गए, ठीक है। अब सीड्स आर देयर इनटू द ग्राउंड, सॉइल है वहां पे, आसपास थोड़ा मैन्योर भी है, ठीक है। But it is waiting for the water, and the water will come when it will come in the month of July and August again. So after 9 months, the water will come after 9 months. So for the 9 months, the seed has to survive
the seed should not die. तो मदर अर्थ ने क्या किया, इन सबको बहुत equipped करके भेजा इस धरती पे, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनको equip किया सुपर एडेप्टेशंस के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आप सीड देख रहे हैं, ये बेर का सीड है, बेर और जिजिफस नुमुलेरिया और मॉरिशाना, इनके सीड से आपके सामने है यहाँ पे दो। अब इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखिए, सीड हैज गॉट अ सीड कोट। अगर आप इन फोटोग्राफ्स को थोड़ा जूम करके देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि देयर आर शेल्स एंड देयर इज अ सीड इन इन द सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हार्ड कोट सीड है, वो आके गिर गया नवंबर दिसंबर में जमीन पे। अब वो उसको सर्वाइव कब तक करना है, जब तक बारिश में पानी नहीं आ रहा नेचुरली, ठीक है, और वो आएगा 9 महीने बाद। तो इसको सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही बीज आके गिर गए नवंबर दिसंबर तक, फ्रूटिंग हो गई, दे आर ऑल ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले आएगी सबसे तेज सर्दी। इन डेजर्ट द टेम्परेचर मे गो अप टू -2 -3 डिग्रीज, -6 एट टाइम्स। द सीड शुड नॉट डाई। उसके बाद आएगा आंधियां चलती हैं यहाँ पे, विंड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं। तो द सीड विल बी रोलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स में बी वॉकिंग ऑन टू इट, एनिमल्स में बी ईटिंग इट। द सीड शुड नॉट डाई। एयर पार्टिकल, जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो एयर फ्रिक्शन होता है उसमें ना, सैंड पार्टिकल्स होते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। द सीड शुड नॉट डाई। देन विल कम द हॉट समर. On the rocky habitats, the temperature may go up to 50 to 51 degrees and seed should not die. ठीक है। तो सीड कोड जो मदर ने अपने बेबीज को देके भेजा है, it is actually like a time capsule. It is just helping the seed to survive for a bit longer on for the another stage and another stage, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी स्टेजेस ये सीड पास करता हुआ आ रहा है, with every single phase, the seed coat will get weaker and weaker and weaker, and it will be the weakest by the time the rain will come, right? So as soon as the seed will come in contact with the rainwater, the life will emerge out, right? So this is a very beautiful adaptation by this plant, by the bear plant, and this is a kind of adaptation into the seed dispersal. कुछ सीड्स पे आप देखेंगे तो ये हेयर्स होते हैं, दिस अ कैलोट्रोपस प्रोसेरा, आंकड़े का जो बीज होता है ना, ये वो है। तो कई सारे बीज ने क्या किया, कई सारे प्लांट्स ने क्या किया, अपने जो सीड्स है उनके साथ में हेयर्स दे दिया, या कॉटन लाइक फाइबर दे दिया, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जैसी चीज है। और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये बीज बहुत हल्के होते हैं, तो दे अलाउ द सीड टू ट्रेवल फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस. Ear hairs, as soon as they will land on the ground, and if there is a slightest of moisture, it will immediately stuck to that area. और फिर जैसे ही वहां पे पानी आएगा, the new plant will come up, है ना। And then ये आप इसमें देख रहे हैं, there is a last slide, and you will get to see the hooks into it. So this is Mytinia enua plant, और ये भी डेजर्ट का एक प्लांट है, और इसके अंदर जो आप हुक देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, जो बड़े जानवर होते हैं उनके फर में अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे कोई पास से निकला, अगर आप पैंट जीन्स पहन करके निकल रहे हैं कॉटन पैंट से, तो इट विल गेट स्टिक टू योर पैंट, टू योर पैंट्स और द फर ऑफ द एनिमल्स, एंड इट कैन ट्रेवल विद द एनिमल्स, एंड एज सुन एज एनिमल विल go very close to the water, and if the seed is lucky basically to fall over there, so it will get a chance to survive. So this is what my few learnings are from the park, and I just hope that I was able to make you learn or make you understand a few kind of adaptations that these plants have taken over here. Thank you so much for your time and listening me carefully. Thank you so much, Harshvardhan ji. Arav, So does anyone have any questions? You can put them in the chat, and Harshvardhan ji can answer them.
The question by Lakshmi says, can you spell the common and scientific name of the dhok tree? Yeah, so this is Anagosius pendula, Pendula. And another Anagosius is Nummularia, Nummularia. Yeah, so you had written it right, Anagosius. Yeah, yeah. Anogesius is also one of the pronunciations. Does this have an English common name? Sorry, I didn't know if it had an English common name. Not as far as I know. Like, okay, I've only heard of it as donk. So. Yeah, धोक. So आपको पता है धोक भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है. धोक in Rajasthan, whenever we touch feet of our elder, we say धोक देऊं आपको, है ना? We are touching your feet, so bless us. And this name has been given to a plant, dhok. It means it's a respected plant. So it grows on the steeper angles, steeper slides or slopes of the Aravalli hills, जहां पे दूसरे पेड़ पौधे आराम से नहीं उग पाते. ठीक है. So and it provides a very nice fodder for the cattle, and then it also provides fodder, this timber into this area Aravalli hills. ठीक है. तो क्योंकि एक तो ये यहाँ पे उग रहा है बहुत विषम परिस्थितियों में, और दूसरा इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड फॉर द timber purpose or the fodder it's also providing. So this is a respected plant of that area. That's why it has got a name dhok. Lakshmi ji has another question. Did the conservation program also include focus on lithophytes? Yeah, so Lakshmi ji, this is not just the conservation of the lithophyte, but our habitat is actually a lithophyte. But we have the grasses, and we also have the plants that grow near the water body. So we have all these. We have stemophytes as well. We have halophytes as well. Halophytes are the plant that grows into the salty habitats. So if you come to the park, you will find that we have made few pits there, which is actually a museum of the desert flora. So desert flora does not only mean that we have lithophytes, and we are not only focusing on the lithophytes. We have all sort of plants that are native to the Thar desert or this Marwar region basically. Anyone has any more questions for Harshvardhan ji? I'd like to add something to it, Gaurav and Harsh. My experience with Harsh one morning was absolutely magical. It was, it was one of my best experiences, natural history experiences. So, Harsh, just go ahead and put your number here because I want people to know you more and learn from you while they're in Jodhpur, or in the desert area. So, friends, if you ever go to Jodhpur, you need to speak to Harsh before that and fix up your trip with him into the wilderness, into these areas where everybody will, where he will take you through um, uh, the entire journey, and it's absolutely fantastic. And Lakshmi ji is asking many questions here, which is such a great thing. She's also asking, is there any publication about the level of conservation done where we can know more about it? Yeah. So we have 7 different publications for the park. One is on the plants, that is covering 42 plants of the park. But then we have one more plant book that is not basically for the park, but it is a sister concern project that is we are running in the Nagaur Fort. That's Chhatargarh Fort. So we have listed all those plants that are there, but they are the native plants of the Marwar region. So that's also the publication of the park. We had published it. Then we have one publication on the stone. We have one on the birds. That's actually a checklist of the birds that you get to see. Then we have one on the kites. One we have on the swifts. So we have different publications of the park. You are most welcome at the park, and you can get these from there. And you can also get few of these online. So you can download the PDFs from the website of Rao Jodha Park.
for free. So Lakshmi ji, sorry if I'm interrupting everyone, but Lakshmi ji just made a very good point. Ki Harshvardhan ji, you make a very good teacher, and I just wanted to comment on that. College में जितना plants के बारे में we had lectures, not a single one has been as interesting as your lecture, your presentation today. Thank you so much. I'm feeling happy that you could learn few things from me. And it was not a boring sessions as of colleges. I think we need to do another one specifically on Rao Jodha Park, where you should show many slides and take us through the journey step by step through the old fort walls and water channel systems and all those camouflage insects and lizards and things like that. So it'll be so interesting to see. And then finally, it opens up into a grassland, and then it overlooks a water body. So this is the park is absolutely magical. We should do another one very soon, Harsh, with you. Sure. And this time we need to give us more time so that we can reach out to a much larger audience. I would love to take you on a virtual tour of Rao Jodha Park. Yeah, wonderful. Excellent. So thank you for being here, friends. And thank you, Harsh, and thank you, Gaurav, for doing this. I'm sorry my screen is not so good, but it was a fantastic webinar, nevertheless, and it was fantastic. Thank you, friends, and we will be back in touch with you for our forthcoming webinars. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lakshmi ji, for a wonderful review. Thank you, Gaurav. Thank you, sir. Have a good night. Have a good day ahead. Bye.